India urgently needs to shift to solar power. What did the CJI-led bench say and why? Total solar eclipse, why is it so rare? And there is a history of Indian government before freedom, but why in all sense they cannot be called as government of India? Hello everyone, I am Manas Srivastava and I'm here with the 3 must reads from the Indian Express today. आज की तारीख है 8th April 8th और हर बार की तरह when you open the Indian Express, the newspaper, it acts like a textbook for all stages of your competitive examinations and current affairs, which also drive you to the static part of the syllabus. Now, before I go ahead, very important information that by the end of the day or this evening, you will get a very important document from the UPSC section of the Indian Express. This is called UPSC Key. Okay, जो आपको बताता है कि उस दिन का अखबार the Indian Express उसको कैसे पढ़ना है, how to read it, what to read in it, go beyond the headlines, sometimes dive deep and know some points to ponder. Okay, to make the best use of this initiative, please subscribe the Indian Express UPSC section ka this very important article. Okay, now let me just begin by saying that आज का जो न्यूज़पेपर है, आज का जो अखबार है, उसकी जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है, the front headline, which is going to be the first pick from me today, is a very important article on environment and climate. Okay, it shows the concern of the judiciary towards climate change. Okay, and how? Let's understand it. So it says that India urgently needs to shift to solar power, says a CJI-led bench. Right against adverse effect of climate change, part of rights to life, equality, says Supreme Court. And the excerpt reads, states owe a duty of care to citizens, right to healthy, clean environment, part of this duty, says the court. Now, इससे पहले कि हम आए और बात करें कि कौन से आर्टिकल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया, क्या कहा, first let me just for the sake of telling the importance of solar energy and renewable energy in our country's context is very important. तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो कि इस आर्टिकल में है और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि इंडिया नीड्स टू शिफ्ट टू सोलर पावर ड्यू टू 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज. बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं और समझ के लिखिए तो ज्यादा बेटर है. पहला, India is likely to account for 25% of global energy demand growth over next 2 decades. इतना ज्यादा डिमांड होने वाला है. Okay, तो obviously if we depend on coal for energy, it is not very sustainable, isn't it? It's not very so sustainable, and also from the perspective of energy security is not good. दूसरी चीज जो है वो है रैम्पर्ट एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और ये उसकी डिमांड है, द रैम्पर्ट एयर पोल्यूशन व्हिच इज इंक्रीजिंग डिमांड्स दैट वी शिफ्ट टू क्लीनर एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी. ठीक है. तीसरा, सोलर पावर अनलाइक द कोल डज नॉट स्टेन ग्राउंड वाटर सप्लाईज. अब आपको पता है कि बेंगलुरु में जो कंडीशन हुई, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, scanty rainfall, okay, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हो रहा है. ऑल दीज थिंग्स, सोलर एनर्जी जो है ना उसको बहुत हार्म नहीं करती है. इस वजह से यू आर शिफ्टिंग आवर गेज टू सोलर एनर्जी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जब अगर आपको एस्पेक्ट समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा. Let's go to the first part of this article. In a significant ruling, the Supreme Court has expanded the scope of Articles 14 and 21 to include the right against the adverse effect of climate change. 2 important articles, पॉलिटी बुक खुलनी चाहिए, इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना चाहिए. ये आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी एस्पेक्ट को उठा के सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. ये पहले भी हो चुका है. कहाँ हो चुका है? कमेंट इन द बॉक्स बिलो, लेट अस नो. एवरीबडी शुड लुक फॉर इट. Secondly, the Supreme Court Chief Justice of India says something very important, and I quote,
Article 48A of the Constitution provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Clause G of Article 51A stipulates that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. Although these are not justiciable provisions of the Constitution, they are indication that the Constitution recognizes the importance of the natural world. A three-judge bench presided by Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, has said. Now remember, वो जो दो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं. अब जिन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. इसी वजह से चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये जस्टिसेबल नहीं है. ओके, लेकिन ये स्टेट की एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी हो जाती है और इसीलिए आगे चल के आप पढ़ेंगे दैट द सुप्रीम कोर्ट सेज right to healthy and clean environment is something which is a duty of a state to provide to its citizens as a duty of care. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए इसको इंक्लूड कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में. एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू हार्नस पावर फ्रॉम sources which are renewable in nature, in energy, like in Rajasthan and Gujarat, because the power demand is very high, it's going high. And second, India's international commitment to for climate change. Okay, so what is India's commitment for climate change? इसके बारे में भी the court says, और आपको कई बार ना factual information भी article से ही मिल जा रही है, so you don't need to go here and there. The court pointed out that India aimed to achieve installed renewable energy capacity of 175 gigawatt by 2022. This excludes large hydro, a goal that signified the country's commitment to clean energy adoption, and the future goal is 450 gigawatt installed capacity by 2030. ठीक है. Now, आपको जो क्वेश्चन इसमें दिमाग में आना चाहिए और जो कि मुझे लगता है मेंस ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है that how transition to renewable energy is not only environmental imperative but also a strategic investment in India's future prosperity, resilience and sustainability. ठीक है, और कैसे ये एक सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट भी देता है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सोचना चाहिए, जिसका आंसर ऑलरेडी इस आर्टिकल में है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है. क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि ये केवल एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें, बट इट शुड बी अ स्ट्रैटेजी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को ध्यान में रखे, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखे, रेजिलियंस को ध्यान में रखे, और इसका अपने आप में एक सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट है. ठीक है, तो इसका भी आंसर दिया हुआ है, ये पढ़िएगा और लिखिएगा, बहुत ही अच्छा इसका you will get points in it. Now the last but the most important thing is कि ये सब बातें हो क्यों रही है, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों, ऐसा क्या मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये सारी बातें हो रही है. Now just look at on the second page, the continuity of which is there. The bench was hearing a plea to protect the great Indian bustard GIB from losing its habitat due to power transmission lines. कुछ दिन पहले ये GIB काफी न्यूज में था और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और आपको ध्यान में रखना है कि ये है क्या, ये किस तरह की स्पीशी है, पहले बताइए. एंडेंजर्ड है कि किस तरह की स्पीशी है, ये आपको पता करना है. यू हैव टू जस्ट गूगल एंड सी, एंड प्लीज मेंशन ऑल दीज इन द कमेंट बॉक्स. ये आपको बियॉन्ड द हेडलाइन जाने वाली चीज है, जो मैं बार बार कहता हूँ, गो बियॉन्ड द हेडलाइन, गो बियॉन्ड द हेडलाइन. इसमें GIB के बारे में आपको पता करना है. ना मुद्दा ये है कि यहाँ पे एक 2021 का ऑर्डर था रिलेटेड कि अंडरग्राउंड इट वाज रिलेटेड टू कि अंडरग्राउंड वायर्स, पावर केबल्स डालना चाहिए ताकि GIB जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनको सेव किया जा सके. पर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स को सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है और बोला है कि देयर इज अ टेक्निकल चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑर्डर. फॉर एग्जांपल, it says that in the last two paragraphs you get the answer that the Supreme Court said that the underground power transmission cables are available only in 400 kV with length of 250 meters, which would mean more joints leading to leaks. The transmission loss of such cables is about 5 times higher as they don't efficiently transmit AC power. Also, the Electricity Act does not
contemplate the acquisition of land for laying underground cables, while overhead transmission lines requires only the right of way, the bench said, adding that it may also lead to environmental issues for many vulnerable species, result in forest fires, etc. तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि देयर इज सम अदर इशू, बट उससे कनेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी है और आपको इस चीज को ध्यान में रखना है. ऑल्सो सी दैट लेटेस्ट अभी और कौन कौन से इश्यूज को राइट टू लाइफ और आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 से कनेक्ट किया गया है या उसके अंदर लाया गया है. So this is an important article, needs a very careful reading. Okay. Now my second pick from today's newspaper comes directly from the explained page. In fact, जो next two reads हम explained page से ही हैं. It says total solar eclipse in North America. Why is this so rare? ठीक है. तो इंडिया में तो नहीं हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि आप ये न्यूज में स्किप कर दें. इट इज रेयर. अगर रेयर है तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स. So on Monday, a total solar eclipse will cross North America, passing over Mexico, United States, and Canada. It will not be visible in India, but this type of solar eclipse is rare event for any particular spot. तो दो चीज उस वाले में आपको जो पहला आर्टिकल था, in that you have to open a polity book alongside. In this particular article, you have to open your geography book, okay, alongside. So what is total solar eclipse? A solar eclipse takes place when the moon moves in between the earth and the sun. The moon blocks the sun's light, either fully or partially, casting a huge shadow on some parts of the world. There are 4 different types of solar eclipse: total solar eclipse, annual solar eclipse, partial solar eclipse, and hybrid solar eclipse. Now, चारों सोलर एक्लिप्स के बारे में आपको जानना चाहिए. When the moon blocks the sun entirely, the areas in the center of the moon's shadow at the time witness a total solar eclipse. तो ये total हुआ. When the moon passes in front of the sun but is at or near the farthest point from the earth, annual solar eclipse occurs. A partial solar eclipse occurs when the moon blocks just a part of the sun, giving it a crescent shape. And a hybrid solar eclipse is witnessed when an eclipse shifts between annular and total solar eclipse as the shadow of the moon moves across the globe. तो ये 4 है, इनको जो है आप कहीं नोट डाउन करिए. Helpful, it will be helpful if you make a diagram alongside. It will help in retention and revision also. I have already said that picture skew memory stays. और geography के topics पे you must make a diagram. Now, there is also a question on why often solar eclipse is seen, but most important is why is a total solar eclipse so rare? So a total solar eclipse at a given spot on earth occurs only once in about 400 years. इसलिए ये question important हो जाता है. That is because a total solar eclipse is only visible if one is standing in the umbra, the middle and the dark part of the lunar shadow. The umbra shadow is very small and covers less than 1% of the globe during a solar eclipse. Very potential question for your examination, और अगर एग्जाम में नहीं भी आता है, for your general knowledge, it is very important. Now the last read for today is Bose Barkatullah, A History of Indian Governments Before Freedom. अब आपको पता है that actor Kangana Ranaut, the BJP candidate from Mandi, has claimed that Subhash Chandra Bose, not Jawaharlal Nehru, was the first Prime Minister of India, citing the Provisional Government of Free India declared by Bose in Singapore during World War II. Now, this has given you an opportunity to just revise to the chapters of history. Go back to the chapter of history. पहले तो आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में you should have knowledge. You should know that सुभाष चंद्र बोस से associated ये आजाद हिंद फौज में और कौन लोग थे. You know that when he arrived in Japan, arrived in Singapore, this Azad Hind Fauj took shape. He proclaimed the government of Azad in Hind, which is Free India. But important other members of this Azad Hind Fauj were A.C. Chatterjee, who was in charge of finance. S.A. Iyer was Minister of Publicity and Propaganda. And Lakshmi Swaminathan had the Ministry of Women's Affairs. Please look at this concise history which is mentioned in this article. But what is also important is to know about the other provisional government, which is 20 years before Azad Hind Fauj, and it was formed in Kabul, and it is known as India Independence Committee, IIC. ये World War I के दौरान है,
और यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड ऑटोमन एम्पायर का हेल्प लिया गया था. इट वाज द एड फ्रॉम द सेंट्रल पावर्स of the World War I. And there are two important names here. One is Mahendra Pratap and then is Maulana Barkatullah. Now, Barkatullah was a part of Gadar movement also. This also you should know. Now, there is a important paragraph which says why they cannot be called as government of India. And it says, first, neither of these governments gained wide international recognition. While some countries did recognize and support them, they did so for their own motives. After the wars, this support vanished. Second, these governments never control Indian territory. So, ये दो important facts हैं जो आपको पता होनी चाहिए. So, these were my 3 must-reads from the Indian Express today. You can have your own. Please write to me at manas.srivastava@indianexpress.com or below in the comment box. Do comment and tell us what do you think about these important reads from the Indian Express. That's all. Think smart, work hard, conquer your goal. Bye-bye.